ओके, सो हम सैचुरेशन मोड की बात कर रहे थे. So we were talking about saturation mode. Saturation mode हम देखना चाह रहे थे. So let's quickly recall कि active mode में active mode and reverse active mode, and then we will talk about the saturation mode. So active mode के case में you have a meter based junction as forward biased. So let me draw the figure here. So for active mode, you have a meter based junction forward biased, which means the barrier voltage is sufficiently low, so a large number of electrons diffuse from N to P, while a small number of holes diffuse from P to N. These large number of electrons, being minority carriers in p-type region, diffuse across the base region and reach the end of the base region, and there they experience the drift because of the barrier voltage and will drift into the collector, forming the collector current. Since emitter is heavily doped relative to the base, so you get a larger number of electrons while smaller number of holes. So as a consequence आपको ये IC मिल जाता है, which is mainly because of these electrons. अगर आप रिवर्स एक्टिव मोड की बात करें तो रिवर्स एक्टिव मोड के केस में you have CBJ forward biased and EBJ is reverse biased. So since CBJ is forward biased, so electrons will diffuse from N to P, while same number of holes will diffuse from P to N. क्योंकि यहाँ concentration का फर्क नहीं है, तो जितने electrons diffuse हो रही हैं उतने holes भी diffuse होंगे. And these electrons will diffuse across the width of the base region, will reach into the depletion region of emitter base junction, and will experience the drift and form this emitter current. So आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो base current है, जो यहाँ पर holes की वजह से जो current flow कर रहा है, that and the resulting IE are equivalent. So as a consequence जो beta आपको यहाँ obtain होगा, it's quite small. So ये main difference है. So saturation को sort of we can think of it as one way of thinking it as a superposition of these two modes. So let's see कि हम saturation में ये flow of electrons को और flow of holes को किस तरीके से explain कर सकते हैं. So saturation के case में you have both emitter based junction and collector based junction as forward biased. So this is your N plus region, this is P region, this is N. So emitter based junction हम saturation के लिए कह रहे हैं is forward biased. Also collector based junction is forward biased. So if emitter based junction is forward biased, that means a large number of electrons will diffuse from N-type emitter to P-type base, while small number of holes will diffuse from P-type base to N-type emitter, because there is a difference in doping. So electrons ज़्यादा diffuse हो रहे हैं, holes जो हैं smaller diffuse हो रही हैं. So base case and के पर you get some finite value of NP of 0. So some electrons have been made available at this end of the base region. However, CBJ is also forward biased, which means the barrier voltage for CBJ is also low. So some electrons will diffuse from N to P, while others holes will diffuse from P to N. So that means कि यहाँ पर जो corresponding आपके पास concentration है NP of W, that is now finite. आप active के केस में recall करें तो चूंकि CBJ was not forward biased, so NP of W was equal to 0. Here, however, because CBJ is forward biased, so there is some finite concentration of electrons available at this upper end of the base region as well. So active की निस्बतन active के केस में NP of 0, NP of W was equal to 0, और इस केस में NP of W is equal to some finite value. So what do you expect? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन करंट यहाँ पर जो डिफ्यूज होंगे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज क्यों हो रहे हैं बेस रीजन में? They are diffusing because of the change in concentration available.
तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यहाँ पर सैचुरेशन के केस में करंट क्या एक्टिव मोड जितना ही होना चाहिए या एक्टिव मोड से ज़्यादा होना चाहिए या एक्टिव मोड से कम होना चाहिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये जो डिफ्यूजन करंट बेस में फ्लो कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शुड इट बी स्मॉलर देन दैट अचीव्ड इन द एक्टिव मोड? शुड इट बी लार्जर देन दैट अचीव्ड इन द एक्टिव मोड? सिर्फ इलेक्ट्रॉन करंट की भी बात हो रही है जी। एनी आइडिया? सर ज़्यादा होगा। देखिए, दोबारा से इस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए, ये हम कह रहे हैं कि एनपी ऑफ ज़ीरो है, ठीक है, ये बेस के स्टार्ट के एंड के पर स्टार्ट पे है। ये अब हम कह रहे हैं कि एनपी ऑफ डब्ल्यू है, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द स्लोप। रिकॉल करें, जो डिफरेंट करंट है यहाँ, जो अल्टीमेटली कलेक्टर करंट बनना है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस स्लोप, दिस चेंज इन दिस रेट ऑफ चेंज, इस स्लोप के प्रोपोर्शनल है। अब आप रिकॉल करें कि एक्टिव मोड के केस में ये क्या था। एक्टिव मोड के केस में ये कोई इस किस्म की सिचुएशन थी। तो रेट ऑफ चेंज किस केस में ज़्यादा है, एक्टिव के केस में या सेचुरेशन के केस में? एक्टिव है। राइट, सो यू एक्सपेक्ट, वी डू एक्सपेक्ट कि बिकॉज ये लाइन की स्लोप अब इस तरह से एडजस्ट हो रही है, तो एक्टिव के केस में आपको ज़्यादा करंट मिलना चाहिए और सेचुरेशन के केस में करंट आपको कम मिलना चाहिए। और जैसे जैसे आप सीबीजे को मज़ीद फॉरवर्ड बायस करते जाएंगे, ये लाइन मज़ीद हॉरिजॉन्टल के करीब आती जाएगी। अल्टीमेटली इट विल बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। इस केस में क्या करंट होना चाहिए when the line is perfectly horizontal, when np of w is equal to np of 0? What should be the collector current in this case? ज़ीरो सर। जीरो होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि देर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल, इसी चेंज पे तो हम रिलाई कर रहे थे। अब अगर ये चेंज खत्म हो जाती है तो देन दैट मीन्स कि करंट विल रिड्यूस टू जीरो। इसीलिए हमने जब प्लॉट किया था लास्ट टाइम, आप रिकॉल करें, तो हमने प्लॉट किया था, हमने एक्टिव के लिए इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की थी, और उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन केस है वो -0.4 वोल्ट है। बीसीबी को हम प्लॉट कर रहे थे, और हमने कहा था कि ये आपके पास सेचुरेशन रीजन है एंड द करंट विल अल्टीमेटली रिड्यूस टू जीरो। सो ये वाला पॉइंट है जिसको भी हमने मेंशन की है। सो सेचुरेशन के केस में करंट विल बी टिपिकली स्मॉलर देन दैट इन द एक्टिव मोड, एंड जैसे जैसे आप सीबीजे को मजीद फॉरवर्ड बायस करते जाएंगे, करंट विल टेंड टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस टू जीरो। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ द बिहेवियर दैट वी गेट इन सेचुरेशन मोड। सो वी आर सेइंग कि इस एंड के ऊपर, बेस के इस एंड के ऊपर, जिसको हम जीरो से लेबल कर रहे हैं, एन पी ऑफ जीरो इज सम फाइनाइट quantity, so concentration is some finite number, and np of w is some finite entity as well. So that's why slope has reduced, and as a consequence the resulting current is smaller relative to the one achieved in active mode. So mathematically हम ये कह सकते हैं कि active mode के केस में just आपके पास फर्स्ट टर्म थी, अब आपके पास एक सेकंड टर्म भी आ गई है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बायस्ड कलेक्टर बेस जंक्शन। और नेगेटिव साइन हमने इसलिए यूज़ किए, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए, तो नेगेटिव साइन हमने इसलिए यूज़ किए बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ईबीजे की वजह से दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द टॉप, एंड सीबीजे के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस जो कंट्रीब्यूशन है सीबीजे के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से, इट इज़ बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईबीजे कंट्रीब्यूशन टू फॉर्म द कलेक्टर करंट। सो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। सो एन पी ऑफ ज़ीरो एंड एन पी ऑफ डब्ल्यू, नोट करें कि ये टर्म वाज एब्सेंट इन केस ऑफ एक्टिव मोड, क्योंकि इस केस में सीबीजे वाज नॉट फॉरवर्ड बायस्ड। सो दिस मीन्स के आईसी जो है अब आपका, हमने पहले भी यहाँ से भी ये देख लिया, स्लोप से भी और इस इक्वेशन से भी देख लिया कि आईसी ओवरऑल जो है इज रिड्यूस्ड रिलेटिव टू द एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। सो we did develop the pi model last time for active mode.
So let's extend that pi model to accommodate the saturation equation. So ये हमने last time develop की थी active mode के लिए, active mode को represent करने के लिए NPN transistor में active mode की representation के लिए this equivalent circuit model was developed last time. ये IS exponential of VBE by VT था. ये हमने कहा था कि IS over बीटा होना चाहिए इसका स्केल करंट, इसके थ्रू करंट शुड बी IB एंड द वोल्टेज हियर शुड बी VBE. तो ये पाई मॉडल था जो हमने डेवलप किया था. अब आप देखिए हमने इस टर्म को भी किसी तरह इसमें अकोमोडेट करना है. तो दिस टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायोड if the voltage forward voltage across that diode is VBC, if the scale current of that diode is ISC. So let me draw the diode in this way and say that this is VBC in this polarity. क्योंकि यहाँ VBC है, VBC has to be forward, इसलिए मैंने एनोड को B साइड पे रखा है, कैथोड को मैंने कलेक्टर साइड पे रखा है. So this is the voltage across the diode and ISC is its scale current. So let's apply KCL and see कि ये equation satisfy हो रही है कि नहीं. So अगर आप कलेक्टर पे KCL apply करें एंड कलेक्टर करंट की हमारी क्या यहाँ पर कन्वेंशन है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, करंट मस्ट बी फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर. सो दिस इज IC, दिस मस्ट बी IE एंड दिस मस्ट बी IB. सो अब आप देखिए IC के लिए IC is the current entering the node and this is also a current entering the node and this is the one exiting the node. So we have IC plus ISC exponential of VBC by VT must be equal to the current exiting the node. So the current exiting the node is exponential of VBE by VT. So IC is equal to IS exponential of VBE by VT minus ISC exponential of VBC by VT. So आप देख सकते हैं कि given equation satisfy हो रही है if we place the diode in this way in the pi model. So this is our model for, this is the model for an NPN transistor operating in saturation mode. So ये हमारे पास इस तरीके से हमने saturation mode के लिए एक equivalent circuit model obtain कर लिया which we can use for analysis once we have determined that the NPN BJT is operating in saturation mode. यहाँ पर दूसरी चीज़ आप ये नोट करें कि यहाँ पर IB जो है, IB फॉर एक्टिव मोड IB वाज जस्ट, एक्टिव के लिए अगर आप रिकॉल करें, एक्टिव के लिए IB वाज जस्ट IS over beta exponential of VBE by VT. However, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IB now has two parts, this part and this part. So IB has now increased IS over beta exponential of VBE by VT plus ISC exponential of VBC by VT. तो ये टर्म जो है ये ऐड हो गई है IB में. So IB relative to the active mode has now increased and IC relative to the active mode has now reduced. So IC के केस में ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो गई है और IC आपका स्मॉलर हो गया है, और IB के केस में ये टर्म एड अप हो गई है और IB जो है आपका लार्जर हो गया है. सो सैचुरेशन के केस में जो बीटा हम डिफाइन करते हैं उसको हम बीटा फोर्स्ड कहते हैं. सो बीटा फोर्स्ड इज डिफाइंड एज IC ओवर IB. नोट करें कि बीटा इज, जो टर्म बीटा हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ओनली स्पेसिफिक टू द एक्टिव मोड. सो बीटा जब भी हम कहेंगे तो हम एक्टिव मोड की बात ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे. बीटा इज़ ओनली डिफाइंड फॉर एक्टिव मोड. जब हम सैचुरेशन की बात करेंगे तो वी कॉल इट बीटा फोर्स्ड, एंड बीटा फोर्स्ड विल ऑलवेज बी लेस देन बीटा. व्हाई? बीटा फोर्स्ड विल ऑलवेज बी लेस देन बीटा. जी इसकी रीज़न देख सकते हैं इन दो एक्सप्रेशन से. देखिए IC जो है यहाँ पर IC इज ऑलवेज स्मॉलर देन IC ऑफ द एक्टिव मोड, IB इज ऑलवेज लार्जर देन IB ऑफ द एक्टिव मोड बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल टर्म. यहाँ पर जो एडिशनल टर्म ये वाली आ गई है इसकी वजह से IB हमेशा एक्टिव मोड के IB से ज़्यादा होगा सैचुरेशन के केस में, और IC हमेशा, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है तो IC हमेशा स्मॉलर होगा रिलेटिव टू द एक्टिव मोड फॉर सैचुरेशन मोड. सो दैट मीन्स बीटा फोर्स विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन बीटा, और बीटा फोर्स को फर्दर आप स्मॉल कर सकते हैं बाय
मेकिंग CBJ फर्दर फॉरवर्ड बायस्ड। तो CBJ को अगर आप मज़ीद फॉरवर्ड बायस्ड कर दें तो मज़ीद आप बीटा फोर्स्ड को स्मॉल कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बीटा फोर्स्ड कहते हैं बिकॉज इट कैन बी फोर्स्ड टू एनी वैल्यू। तो बीटा फोर्स्ड जो है उसको जो मर्जी आप सेट कर लें, इट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन बीटा, और जितना भी स्मॉलर करना चाहें आप कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन। सो IC ओवर IB अगर आप कंप्यूट करते हैं इन सैचुरेशन मोड तो दैट इज कॉल्ड बीटा फोर्स्ड एंड इज डिनोटेड एट बीटा फोर्स्ड, एंड बीटा फोर्स्ड कैन बी adjusted to any desired value that is always less than beta by adjusting VBC। तो VBC को आप एडजस्ट करते जाएं और आप अपनी मर्जी का बीटा फोर्स्ड सेट कर सकते हैं। तो बीटा फोर्स्ड इज ऑलवेज लेस देन बीटा। सो स्विचेस के केस में टिपिकली हम टोटल स्विच के क्रॉस इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या वोल्टेज आ रही है। तो इस को जब हम BJT को एज अ स्विच यूज़ करते हैं तो वी आर नॉर्मली इंटरेस्टेड इन कि यहाँ पर आपके पास VCE क्या आ रही है, एंड VCE शुड बी अ स्मॉल एंटिटी, शुड बी अ स्मॉल नंबर। ठीक है, देखिए अगर आप इसको एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं लेट से किसी भी लोड को ड्राइव करने के लिए, यहाँ पर ये लोड है जिसको आप ड्राइव करना चाह रहे हैं +12 वोल्ट। सो इट्स अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट कि आप चाहते हैं कि इस लोड के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर हो ताकि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन लोड के क्रॉस हो, रेदर देन के ज़्यादातर वोल्टेज जो है आपके स्विच के क्रॉस अपीयर हो जाए, विच वुड मीन के स्विच में सिग्निफिकेंट पावर डिसिपेशन हो रही है, विच इज़ अनडिजायरेबल। यू डोंट वांट के मैक्सिमम डिसिपेशन स्विच के क्रॉस हो, यू वांट के मैक्सिमम पावर डिसिपेशन लोड को डिलीवर हो और स्विच जस्ट ऑन या ऑफ की स्टेट को डिटरमिन करे। सो दैट मीन्स कि VCE शुड बी अ स्मॉल नंबर। और अभी हम ये डेवलपमेंट करेंगे एंड विल सी कि सैचुरेशन इज सुटेबल फॉर द ऑन स्टेट ऑफ अ स्विच बिकॉज इन सैचुरेशन VCE की जो रेंज है, VCE रेंज बिटवीन 0.1 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट। So it's a small number. So VCE is in 0.1 and 0.3 वोल्ट। सो रफली आप कह लें कि यहाँ पर आपके पास 0.2 वोल्ट आ गया और बाकी आपके पास 11.8 वोल्ट जो है, अगर मैं इसकी एवरेज ले लूँ तो 11.8 जो है लोड के क्रॉस डिलीवर हो गया। तो विच इज़ अ गुड सिचुएशन कि आपके स्विच के क्रॉस मिनिमल पावर डिसिपेशन हुई और मैक्सिमम पावर आपने लोड को डिलीवर की। सो दिस इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, एंड सिंस VCE for saturation is in this range, so that's why we prefer this mode for on state of a switching application. Active के केस में भी हम डेवलपमेंट करेंगे एंड विल सी कि एक्टिव के केस में VCE is greater than or equal to 0.3 volt. Saturation के केस में VCE is in this range 0.1 to 0.3 volts. So since we will be interested in VCE, so let's see कि VCE को आप VCB और VBE की टर्म्स में किस तरह लिख सकते हैं। So VCE is VC minus VE. Let's add and subtract VB here, minus VB plus VB minus VE. So we can write it as VCB plus VBE. सो हमने इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे VCB की टर्म्स में और VBE की टर्म्स में। सो सिंस इन फॉर अ स्विचिंग एप्लीकेशन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन VCE, so VCE can be readily expressed as sum of VCB and VBE. So since अगर आप constant voltage drop model use करें for a forward biased PN junction, so VBE जो है हमने कहा है कि 0.7 वोल्ट है और VCB हमने कहा था कि at the very start of the saturation region VCB is minus 0.4 volt, which means VBC is 0.4 volt. So make this substitution here, we get VCE saturated as 0.3 volt. So we are saying at this point VCB equal to minus 0.4 volt corresponds to VCE equal to 0.3 volt. So on the right side of VCE equal to 0.3 volt you get active mode, on the left side of VCE equal to 0.3 volt you get saturation mode.
So when you switch between active mode and saturation mode, VCE is equal to 0.3 volt. So switching between active to saturation occurs at VCE equal to 0.3 volt. So ये वाला पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने निकाल लिया कि ये वाला पॉइंट किस VCE को कोरस्पॉन्ड करता है. So let's now see कि ये कब ये वाला जो पॉइंट है जिस पे IC has reduced to 0, ये किस VCE को कोरस्पॉन्ड करता है. So since IC की हम एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, so let's equate that expression to 0 to see कि VCE का दूसरा एंड क्या आता है. So IC is equal to IS exponential of VBE by VT minus ISC exponential of VBC by VT को अगर आप 0 सेट कर दें तो हम ये वाले के कोरस्पॉन्डिंग VCE की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे कि इट विल बी 0.1 वोल्ट्स. सो अगर आप इसको 0 इक्वेट करते हैं तो दैट मीन्स कि EBJ की वजह से जो कंट्रीब्यूशन आया है और जो CBJ की वजह से कंट्रीब्यूशन आया है, द टू आर इक्वल. सो IS एक्सपोनेंशियल ऑफ VBE by VT is equal to ISC exponential of VBC by VT. So these two contributions are equal. So let's divide both sides by exponential of VBC by VT. So we get exponential of VBE by VT divided by exponential of VBC by VT equal to ISC divided by IS. इस exponential को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. So let's simplify this. VBE minus VBC can be written as VB minus VE minus VB minus VC, which can be written as VB minus VE minus VB plus VC. तो आप देख सकते हैं कि ये VBs कैंसल आउट हो गए and you are left with VC minus VE, which can be written as VCE. So that means कि इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल ऑफ VCE divided by VT is equal to ISC divided by IS. So let's take natural log on both sides. So we get VCE divided by VT equal to natural log of ISC divided by IS. So VCE is equal to VT. अगर आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो VT is 25 मिली, natural log of ISC divided by IS. रिकॉल करें, हमने पहले भी बात की थी कि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन एरिया इज सिग्निफिकेंटली लार्ज relative to the emitter based junction area. So let's assume कि ISC by IS is equal to 100, or in other words we are saying कि ISC collector based junction is 100 times larger than the emitter based junction. So let's make this substitution here. So you get VCE is equal to 0.115 volts. So this corresponds to ISC by IS equal to 100, and if ISC divided by IS is equal to 50, so using the same equation we determine the value VCE is equal to 0.098 volt. So what we conclude from here is that इस पूरी range के लिए when ISC divided by IS is from 50 to 100, VCE is almost equal to 0.1 volts. ठीक है जी. तो एक्टिव से जब आप सैचुरेशन में आए तो उस टाइम पे VCE 0.3 वोल्ट्स थी, और जब कलेक्टर करंट 0 हो गया तो उस टाइम पे VCE was equal to 0.1 volt. So we can conclude here that for saturation mode the range of VCE is from 0.1 volt to 0.3 volts. So इस रेंज में ये वेरी करता है. So for saturation mode VCE is in this range. VCE is equal to 0.1 volt to 0.3 volts. So VCE varies from 0.1 volt to 0.3 volt. इस पॉइंट के ऊपर VCE is 0.3 volts, and when saturation and when the current is reduced to 0, so that corresponds to 0.1 volts. So VCE always varies from 0.1 to 0.3 volt.
फॉरवर्ड बायस्ड एमिटर बेस्ड जंक्शन के लिए आप रिकॉल करें, उस केस में हम कहते थे कि वोल्टेज VBE वेरीज फ्रॉम 0.6 टू 0.8 वोल्ट, और जब हम कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल यूज़ करते थे तो हम कहते थे कि ठीक है यार, इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए VBE को 0.7 वोल्ट ले लें। सो इसी सेम आइडिया को यूज़ करते हुए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर हमने इसके लिए कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल यूज़ करना है तो VCE को क्या लिया जाए? When we know that the BJT is in saturation, and based on this idea that VC always varies between 0.1 to 0.3 volt, constant voltage drop model sort of यहाँ पर अगर apply किया जाए तो what should be VCE? जी क्या ख्याल है, VCE को क्या सेट किया जाए constant voltage drop model टाइप की चीज़ यूज़ करते हुए? हाँ जी, एनी आइडिया? कोई इनपुट नहीं देगा यार। सो यहाँ पर जस्ट आप जिस तरह हमने उधर एवरेज ली थी, यहाँ पर भी आप एवरेज वैल्यू इसकी यूज़ कर सकते हैं। सो VC सैचुरेटेड कैन बी सेट इक्वल टू 0.2 volts. So what we are saying is कि VC saturated varies between 0.1 to 0.3 volt, and at the edge of saturation, when you are shifting from active to saturation, at that edge we have VC saturated equal to 0.3 volts, and when the BJT is deep into saturation, we get VC saturated equal to 0.2 volts. So that means for quick analysis using constant voltage drop model, once we have determined that the BJT is in saturation, we can readily set VCE equal to 0.2 volt for the purpose of analysis. So ये एक्सरसाइज 6.8 है, ये हमने ऑलरेडी कर ली है। इसमें आपने यही देखना था कि IC जो है ज़ीरो कब होता है, उस केस में दिस इज द एक्सप्रेशन, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस एक्सप्रेशन, and then you can substitute the value and see के VCE will be around 0.1 volts. एक्सरसाइज 6.9 देख लेते हैं। इस केस में हमें कहा जा रहा है कि यूज इक्वेशंस 6.14, 6.15 एंड 6.16। Use equation 6.14, 6.15 and 6.16 to show that BJT operating in saturation with VCE equal to VCE saturated has a forced beta given by this equation. And then we determine beta forced for beta is equal to 100, ISC divided by IS equal to 100, and VCE saturated equal to 0.2 volts. So हमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन 6, 14, 15 एंड 16 यूज़ करें, जो कि ये 614, 615 एंड 616, एंड शो दैट कि बीटा फोर्स कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन। सो इसको कर लेते हैं। सो बीटा फोर्स यहाँ पर आपके पास आ जाता है, बीटा फोर्स इज IC ओवर IB। सो लेट्स मेक द सब्सटीट्यूशन, ये IC आप न्यूमरेटर में सब्सटीट्यूट कर दें, ये IB आप डिनोमिनेटर में सब्सटीट्यूट कर दें। सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन फॉर बीटा फोर्स्ड। So let's divide the numerator and denominator by VBC by exponential of VBC by VT. So you get this expression. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस VBE माइनस VBC को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले भी देखा है कि इसको आप VCE के इक्वल लिख सकते हैं। So let's take a quick look again. So यहाँ पर VB and VB will be cancel out and we get VCE. So let's replace VBE minus VBC by this VCE. So इसको अगर आप VCE से replace कर देंगे
तो you get the desired expression. Beta forced is equal to beta IS exponential of VCE divided by VT minus ISC whole divided by IS exponential of VCE divided by VT plus beta ISC. So ये आपके पास desired form में expression आ गई है. अब जो आपको given values दी हैं, let's substitute them here and see कि क्या result आपको मिलता है. So if you make the substitution, beta is equal to 100 आपको given है, ISC divided by IS equal to 100 आपको given है, VCE saturated equal to 0.2 volt आपको given है. So let's make this substitution here and see कि आपके पास beta forced की क्या value आती है. So we get beta forced equal to 22.194. So अब यहाँ पर नोट करें कि बीटा आपके पास, so this is less than beta क्योंकि बीटा आपको given है and beta is 100. So this is less than beta. So this makes sense. Beta forced has to be less than beta. Beta forced should always be less than beta. तो हम कह रहे हैं कि अगर VC saturated आप 0.2 वोल्ट आपने सेट किया हुआ है तो उस केस में बीटा forced will be significantly smaller than 100 and बीटा forced आपके पास जो आ रहा है it is 22.194. So beta forced is 22.194. ठीक है जी, लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. एनी क्वेश्चंस?